Dear students, welcome to my channel Classic Science. I am Anwar Ismail and I am going to teach you Science First of Standard 9. Today we are going to learn first chapter, the laws of motion. First of all, we will try to understand the concept of motion. If I ask you what is motion, then what would you say? Motion means change in position of an object, है ना? अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम कहते हैं उसको मोशन में है ना? For example, moving car, moving bus, moving train, flying birds, moving air, etc. All are the examples of motion. And if objects, they are not changing their position, then we say that they are stationary or they are at rest, isn't it? For example, a stone kept on a ground, it is not moving. Therefore, it is in no motion. Okay? Motion can be seen or cannot be seen. Moving bus, moving car, walking person, etc. can be seen by us. We see that objects, they are changing their position. And some motions, they are not visible. For example, blood circulating in our body. Although it is moving, but we are unable to see it. Similarly, moving air is moving, but it cannot be seen. Okay? So this is general concept of motion, change in position. Change in position. But in physics, the concept of motion is beyond it. We'll try to learn the concept of motion in physics. We'll take an example. Suppose a person standing on a road is watching a tree, observing a tree. Then the tree will appear stationary, no doubt. For a person standing on a road, the tree appears stationary, appears at rest. But for the person who is sitting in a moving bus, if he looks through the window, the same tree appears to be moving in backward direction. For the person sitting in a bus, in a moving bus, the tree appears to be moving in backward direction. तो है ना इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. अब वो मूविंग नजर आ रहा है. क्यों मूविंग नजर आ रहा है? ट्री यहां पर है और मूविंग ट्रेन यहां पर है या मूविंग बस यहां पर है, तो वो कंटिन्यूअसली अपनी जगह चेंज करते रहती है, आगे बढ़ते रहती है बस ट्रेन, तो पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो हमको मूविंग नजर आ रहा है. बस आगे जाती है तो वो पीछे जाता होगा. तो फिर आप क्या कहेंगे उस ट्री के ताल्लुक से कि वो ट्री स्टेशनरी है क्या फिर मूविंग है? स्टैंडिंग पर्सन के हिसाब से जो रोड पर ठहर कर देख रहा है ट्री को, वो रेस्ट में है, और मूविंग बस में बैठकर जो देख रहा है ट्री को, उसके हिसाब से वो मोशन में है. तो दो भी चीजें सही है. तो फिर मोशन कैसा हो गया? मोशन ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. ठीक है,
इट इज रिलेटेड टू सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, रिलेट करता है, सराउंडिंग से रिलेट करता है। ऑब्जर्वर स्टेशनरी भी हो सकता है, ऑब्जर्वर मूविंग भी हो सकता है। ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो तो ट्री स्टेशनरी नजर आएगा, ऑब्जर्वर अगर मूविंग हो तो जो है वो ट्री जो स्टेशनरी है वो मूविंग नजर आएगा। इसी तरह की और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन अ मूविंग बस and if you see, you look, the person sitting in front of you, he appears stationary, although he is moving with a bus, but if you look to him, he appears stationary. And for the person who is standing on the road, if he look the person sitting inside the moving bus, the person appears moving. है इंटरेस्टिंग चीज। तो इस तरह ये जो कंसेप्ट है मोशन का, ये रिलेटिव कंसेप्ट है और किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग पर। मोशन फिजिकल जो कंसेप्ट है मोशन का, आई विल राइट हियर। If an object changes its position with respect to its surroundings, it is said to be in motion. It is a relative concept. If a stationary object, if an object appears to be stationary for one person, it may appear moving for the other. तो ये कंसेप्ट है मोशन का, जिसको सिर्फ हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है चीज, सिर्फ इतना ही कहते हैं, लेकिन ये फिजिक्स में कंसेप्ट है। अब हम और एक कंसेप्ट सीखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Suppose there is a curved path like this, curved path, and an object or a person moves from A to B along this curved path. Now measure the distances in different ways.
from upper side along this upper curve path, and from lower side along this lower curve path. Draw a dotted line joining AB. Also measure this distance AB. AB ये भी distance measure की. Now tell me which distance is less. So obviously AB will be less. And which distance will be correct one? Distance AB is correct one. Because it is straight one. Initial point is A, final point is B, and AB line, dotted line, shows the straight distance. Hence, it is correct one. And less than the distance on curved path. तो यहां पर एक कर्व पाथ का जो हमने डिस्टेंस मेजर किया ऊपर से और नीचे से, ऊपर के और नीचे के जो कर्व पाथ है उनका डिस्टेंस जो हमने मेजर किया वो एक्चुअल लेंथ, वो डिस्टेंस है. और ये जो डिस्टेंस मेजर किया हमने ए बी, शॉर्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट. राइट, समझ में आया? अभी हम और एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद डिफिनेशन देखेंगे. Suppose A is the position of Prashant and Sheetal's house. And B is the position of Sangeeta's house. And C is the position of school. Sheetal went to school via Sangeeta's house. Sheetal went to school via Sangeeta's house. From A to B, from her house to Sangeeta's house, she covers 500 meter distance. After that, she went in north direction and covers 1200 meter distance. And Prashant went straight like this. This is Prashant's route. Prashant's route. Can you tell me how much distance Prashant has covered? We can find out this distance with the help of Pythagoras theorem. Because triangle ABC is right angle triangle. Whenever direction changes, 90 angle is formed. Here AC square is equal to AB square plus BC square is equal to 500 square plus 1200 square is equal to 2,50,000 plus 40,40,000. Addition of these two values will be 169,000. 16,90,000. Therefore, AC is equal to 1300 meter. 1300 meter. Now, if you are asked to find the distance covered by Sheetal, then what would you do? You will simply add these two values. Sheetal's distance is equal to
500 plus 1200 is equal to 1700 meter. Both have started their journey from point A. Sheetal and Prashant both have started their journey point A and their destination is same. Destination school. But interestingly, Sheetal, she has covered 1700 meter distance, while Prashant has covered less distance. The distance covered by Prashant is less, 1300 meter. Although their initial and final position is same. These two values are here. Here we have two values, out of which one is actual length covered by an object, that is Sheetal, and this one is the shortest distance between initial point and final point. The actual length, it is called distance. Actual length. Actual length. Covered by an object in motion. While going from one point to another. Whereas displacement is the shortest distance. ये डिस्टेंस शॉर्ट हो गया क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस है। शीतल ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज की, है ना, जिसकी वजह से उसका जो कवर डिस्टेंस है, ट्रैवल्ड डिस्टेंस, वो बढ़ गया। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस between initial and final point, between initial and final point या position, ओके। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू क्लियर this concept. Suppose there is a curved path. Circular path. Say circular path having diameter 14 meter, and a girl, she is walking on this circular path. She starts walking from point A and completes one rotation and again come back to its original position. A girl starts walking on this circular path from point A and again comes back to its original position. Then find out the distance and displacement covered by her. As far as the distance is concerned, the distance here, in case of circular path, distance is equal to circumference 2 pi r equals to 2 into 22 by 7 into r40 is equal to 7 2s are 40, 22s are 44, 44 into 2 is equal to 88 meter. It is the distance, actual length covered by that girl. And what about displacement?
See, definition. Minimum distance between initial and final position. Here, the initial position and final position is same. Okay? Therefore, displacement will be zero. Zero displacement. Now, we'll take another example. Suppose a car is moving from point A to point B. The distance between point A and point B is 360 meters. The car started from point A, started its motion from point A and reaches to point B, and again it comes back to point A. Then find out the distance and displacement. Here the distance is equal to 360 plus 360 is equal to 720 meters, right? Because car has started its motion from point A and reaches to point B and again comes back to point A. Therefore, distance is equal to 360 plus 360, 720, and displacement zero, again zero, because initial position and final position is same. First movement and second movement. Car comes back to its original position. Therefore, displacement is equal to 0. Have you got it? Now, I will tell you about physical point. अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं देखिए. In physics we study about matter, about solid, liquid, gases, etc. and many other laws, natural laws, etc. So in physics when we learn about matter, we measure lengths and we weigh these things. So these are the physical quantities as far as measurement is concerned. These quantities are two types. The physical quantities, they are nothing but properties of matter which can be measured. There are two types, scalars and vectors. Scalars are the physical quantities which only need मैग्नीट्यूड. फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है ना, वैल्यू की जरूरत है सिर्फ, उन्हें कहते हैं स्केलर्स. फॉर एग्जांपल, वेट 50 किलोग्राम. शुगर का वेट 50 किलोग्राम है, इतना कह देना काफी है, आपके समझ में आ जाता. उसको हम डायरेक्शन लगाते हैं क्या? नेवर. डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है. शुगर का वेट 50 किलोग्राम है, ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं. सिर्फ हम क्या करते हैं, क्वांटिटी कितनी है ये बतलाते हैं, उसके डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी स्केलर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, लेंथ, इजी लेंथ, डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, etc. And vectors, the physical quantities which need
both magnitude and direction. They are called vectors. उसके बगैर हमको समझ में नहीं आता, दोनों का बताना जरूरी है, उसके बगैर हमारे समझ में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं मैं डेली लाइफ से, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि वेक्टर्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी स्टूडेंट कहा कि बेंच हटाइए, बेंच हटाओ, ऐसा अगर मैं कहा यानी डिस्प्लेस करो, बेंच को डिस्प्लेस करो, तो उसके समझ में नहीं आएगा. तो वो पूछेगा कि कितना डिस्प्लेस करूं और किधर डिस्प्लेस करूं. मुझे बताना पड़ेगा कि 1 फीट हटाओ, राइट साइड हटाओ, लेफ्ट साइड हटाओ, ऊपर हटाओ, नीचे हटाओ, कहना पड़ेगा ना. 2 चीजें कहना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और क्वांटिटी भी बताना पड़ेगा कि कितना उसको हटाना है और किस डायरेक्शन में हटाना है ना. वरना उसने हटा दिया, हमने नहीं कहा उसको कितना हटाना है, कहाँ हटाना है, और स्टूडेंट ने हटा दिया, तो क्या हम उसको गुस्सा कर सकते हैं कि उधर क्यों हटाया और इतना क्यों, इतना बहुत क्यों हटाया? नहीं. तो देखिए ये है वेक्टर जिसको 2 भी चीजों की जरूरत होती है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जांपल है. इसी तरह फोर्स, वेलोसिटी और बहुत सारे, so many examples are there. You will learn throughout the year and in the next standard. Okay? So these were the concepts of our today's lesson. Write it down in your notebook and also write homework. Try to write the difference between distance and displacement. Okay? We will finish our lesson here. Goodbye.